Bismillahirrahmanirrahim. This is Federal Board HSSC 2 examination, Computer Science Grade 12. ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर 1 है and expected important questions are given here. Question number 1. Which design feature most improves accessibility for visual impaired users? Option A is small font with low contrast, screen reader label and high contrast, decorative and animation only, hidden navigation menus. The correct option is the B, that is screen reader labels and high contrast. Question number 2. A bank enforces 12 characters passwords with symbols. The main trade-off is higher security but harder to recall, lower security and lower usability, higher usability only, no effect on either. The correct option is A, that is higher security but harder to recall. Question number 3. Which condition must hold for binary search to work correctly? Data must be unsorted. Data must be a tree. Data must be sorted. Data must be all integers. The correct option is, क्योंकि बाइनरी सॉर्ट के लिए आपको पता है बाइनरी सॉर्ट उस वक्त काम करती है जब आपके पास डेटा सॉर्टेड कंडीशन में हो, सॉर्टेड में हो. तो correct option is data must be sorted. Question number 4. Inserting 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70 into an empty BST. BST tree में the pre-order traversal is. कहता है कि ये आपने एक वैल्यूज इंसर्ट करनी है BST ट्री में, ठीक है, और फिर उनको प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करना है और देखना है कि वो कौन सा आंसर आएगा. तो मैंने क्या किया, मैंने BST में वैल्यू इंसर्ट की है. ये मैंने BST में वैल्यू इंसर्ट की. BST में वैल्यू इंसर्ट करने का मकसद होता है कि आपने रूट नोड देनी है. अगर रूट नोड से नंबर लेस हो तो आपने लेफ्ट साइड पे एंटर करना है. अगर रूट नोड से नंबर ग्रेटर हो तो आपने राइट साइड में करना है. तो नंबरों की तरतीब से पहले 40 था, ठीक है. नंबर की तरतीब से मैं आपको दिखा देता हूं कैसे थी. अब देखिए, पहले 40 था इधर, तो मैंने रूट नोड पे लिखा. 20 था, मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया क्योंकि वो 40 से लेसर था. 60 लिखा, तो मैंने देखा कि 40 से 60 ज्यादा होता है, तो मैंने इसको राइट साइड पे लिखा. फिर 10 मिला, तो मैंने फिर 40 के देखा कि ये 10 40 से लेस है, तो मैंने लेफ्ट साइड पे ले गया. उधर 20 पड़ा हुआ था. फिर मैंने देखा क्या 10 20 से भी लेस है, तो मैंने लेफ्ट साइड पे ले गया, ठीक है. इसी तरीके से 30 मैंने देखा, वो 20 के राइट साइड पे लिख दिया मैंने. 50 देखा मैंने, 40 के राइट पे आएगा, 40 के राइट पे आएगा, 60 के लेफ्ट पे आ जाएगा. 70 40 के राइट पे, 60 के भी राइट पे आ गया. तो ये मेरे पास आ गया. अब मुझे कौन सी ट्रैवर्सल करनी है? मुझे ट्रैवर्सल करनी है प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में पहले रूट को देखते हैं. तो मैं पहले इसको विजिट करूंगा, यहां से विजिट करना शुरू किया, यहां से विजिट करना, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड को देख लिया, तो इसके पेरेंट को चेक किया, ठीक है. फिर मैं इधर आ गया, लेफ्ट चाइल्ड को देखा. अब देखिए, मैंने पेरेंट को भी देख लिया, लेफ्ट चाइल्ड को देख लिया. अब मैं इसके राइट चाइल्ड को देखूंगा, राइट चाइल्ड को देख लिया. अब राइट चाइल्ड को देखा, तो अब देखिए कि पेरेंट को मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था, ये पेरेंट को भी मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब इसके बाद इसके लेफ्ट को देखना है, क्योंकि प्री ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को देखना पड़ेगा. तो ये मैंने 60 देखा, 60 लिखा, और 60 के बाद फिर मैं होता हुआ 50 के पास चला जाऊंगा, 50 के पास, और 50 से होता हुआ फिर मैं 70 के पास चला जाऊंगा. तो इस तरह मेरे पास तरतीब क्या बनेगी, 40 20 10 30 60 50 70. तो ये देखिए किससे मैच कर रही है,
तो अब देखिए ये किससे मैच कर रही है, 40 फिर 20। अब देखिए यहां तो वो बी से मैच कर रही है, ये बी से मैच कर रही है, या फिर वो डी से मैच कर रही है। ठीक है, अब 40 20 20 के बाद 10 आ गया, इसके बाद 30 आ गया, तो ये बी के ज्यादा करे, बी से एग्जैक्टली मैच कर रही। 30 के बाद 60 आ गया, 50 आ गया, 70 आ गया, तो आपका करेक्ट आंसर ये हुआ। क्लियर? ये इसकी मैंने आपको ट्रैवर्सिंग भी शो करवा दी है। Question number 5. Which is a key feature of functional programming? Heavy use of mutable globals, functions as first-class values, no side effects, code organized only as classes, avoiding all functions. The correct option is function as first class values, no side effect. Question number 6. The null hypothesis H0 of a study usually state that there is a significant effect, there is no effect, no difference, the sample is too small, the p-value is always 0.05. The correct option is there is no effect, no difference, because h of 0. Question number 7. A classifier has true positive, that is 80, false positive, that is 20, fn equal to 40, tn equal to 60, its recall as 80%, 66.7%, 75%, 57%. TP, we will use this formula TP over TP plus FN. TP 80 दिया था, 80 और FN 40 दिया था, 80 divided by 80 plus 40, 80 divided by 120, you will get answer is 0.67. अब हमने इसको क्या करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी अराउंड 67%, that is 67%, 66.7% mean that is B, 66.7. Question number 8. Why should an organization adopt a clear data protection policy to give all staff unlimited access? इसलिए पॉलिसी होती है to define how stakeholders mean all entities are related to that things, data is used and safeguard, to remove all passwords, to keep all data permanently offline. The correct option is B, जिसमें क्या करना होता है, how stakeholders data is used, के जितने भी stakeholders हैं वो डेटा को कैसे यूज करे सेफली. Question number 9. How does a deep learning network differ from a single layer model? It uses many hidden layers to learn complex features. It never needs data. It cannot process images. It uses no weights. The correct option is A, because it uses many hidden layers to learn complex features. Question number 10. Which is an example of two-factor authentication, 2FA? Password only, password plus a one-time code on the phone, username only, writing the password down. इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि जिसमें पासवर्ड भी आपको आता है और मोबाइल पे फोन पे ओटीपी भी आता है, that is called two-factor authentication. Question number 11. Which technique narrows result in an advanced web search? कहता कौन सी टेक्निक से आप एडवांस वेब सर्च कर सकते हो, यूजिंग अ सिंगल कॉमन वर्ड से,
बुलियन ऑपरेटर्स यूज करते हुए जिसमें एंड और नॉट आते हो, क्लिकिंग द फर्स्ट एडवर्ड को यूज करते हुए, सर्चिंग ओनली सोशल मीडिया। करेक्ट ऑप्शन इज जिसमें हम यूज करते हैं एंड और नॉट यूज करते हैं। क्लियर? दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज अ चार्ट infographic help communicate research findings? It hides the data. It shows patterns visually for easier understanding. It removes the need to collect data. It guarantees a correct conclusions. The correct option is it shows pattern visually for easier understanding. Question number 13. The riskiest assumption of a business is tested first because it is cheapest to build. If false, the whole idea may fail. It increases marketing only. It removes the need for an MVP. The correct option is if false, the whole idea may fall. Next round, I will provide you section B in next video. I hope I can prepare.